Very unfortunate that FIFA is banned Indian football, and at the same time I feel it's a very harsh decision from FIFA to ban Indian football. But at the same time I think it's a great opportunity to get our system right. And it's very important that all the stakeholders, be it federation, state association, sports ministry, to come together, get the system right, and everybody work for betterment of Indian football. The suspension of All India Football Federation by FIFA, I would like to ask you, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो सस्पेंशन हुआ है इससे प्लेयर्स को क्या इफेक्ट हो सकता है? मैं प्लेयर है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अभी हम लोग को फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल को बैन किया है। मतलब ये बहुत बड़ा इशू होगा हम लोग का प्लेयर के लिए, और हम लोग का अपकमिंग गेम भी है, वर्ल्ड कप है, और कोई इंटरनेशनल मैच हम लोग खेल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू होगा ये। थर्ड पार्टी तो लेकिन सही है हम लोग को, थर्ड पार्टी मतलब हम लोग जितना भी फाइनेंशियल ये लोग हम लोग को सपोर्ट करो, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहता है कि हम लोग का इस सिस्टम में आके कोई फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता है, वो हम लोग का फुटबॉल को चलाए, ये नहीं हम लोग नहीं चाहता है। हम लोग ये नहीं है थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ये नहीं बोला है। हम लोग को फाइनेंशियली हम लोग को सपोर्ट करो, लेकिन हम लोग को प्लेयर लोग के लिए, जो फुटबॉल प्लेयर है वो जो फुटबॉल के बारे में जानता है उसको चलाने के लिए देना चाहिए। नीतू दा, ये जो बैन आज आया, ये 16 अगस्त के दिन ही आया, एक आयरनी है क्योंकि आज बंगाल गवर्नमेंट का खेला हवे दिवस, आईएफए का फुटबॉल प्रेमी दिवस, और उसी दिन इंडियन फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से बैन कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये बैन नहीं रहेगा। टुमारो एक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन हो जाएगा, बिकॉज इसीलिए जो कोई भी नहीं चाहता है जो इंडिया में फुटबॉल बैन हो जाए। कोई भी आदमी जो भी इसमें आया है उनको भी सोचना चाहिए था जो फीफा इंटरफेयर नहीं पसंद करता है, एमिकेबली सेटल करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया। ये दुख की बात है। ये नहीं, मेरा 6 फॉरेन प्लेयर साइन हो गया, कोच भी हो गया, मेरा पास कुछ पड़ा नहीं है जो फिर हमको इमीडिएटली चाहिए। तो अगर हो जाएगा तो जनवरी महीना में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग क्लियर है। How big a setback is this suspension, the FIFA suspension on the AIFF for Indian football? It is a tremendous setback. I think if we don't work together and get the ban lifted, it is going to set back Indian football to its dark ages. FIFA doesn't accept any kind of third-party intervention in management and administration of football in any of the nations globally. So we have to understand that unless we follow the guidelines and the roadmap that was given by FIFA to us, FIFA is not going to accept it, and FIFA is not going to lift the ban. Then again, FIFA has also said that it has to act independently. The election cannot happen under the COA guidelines. It has to go as per the guidelines and the roadmap provided by FIFA. We have not been doing that. After repeatedly receiving letters and warnings for FIFA, we have completely ignored that. And hence this situation has arisen. What would be your first response to this rather shameful development in Indian football? Very, very sad day. Rather, I will call it as a black day in Indian football. See, FIFA is the biggest body, more than IOA, is the biggest body of sports, in sports. And they are banning our association. If you see this ban, we are the biggest sufferer. We are the biggest sufferer. Because tomorrow the ban will go away. It cannot happen that ban will be there. So if it can be done within these 2-3 days or 5 days, then if the ban can be, then we can play the FC Cup. Otherwise, if we are not playing the FC Cup, in the whole Indian scenario, two things. One is India, Mohun Bagan cannot play the FC Cup. Another is we will be losing the Women's World Cup under 17. The Supreme Court hearing is more and the only solution. Where Supreme Court will say, according to the FIFA guideline, we are removing the COA
and it will, whatever will do. मैं सुबह जब पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ. गलतियां होती है सबसे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है उससे गलती होती है. मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये कल सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सब बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत वाइज लोग हैं. जितना जल्दी हो सके CAA को अपना काम करके AIFF एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देना चाहिए. अगर प्रेसिडेंट बना दिया इतने करप्शन केस के बाद, ED रेड्स के बाद, सारा कुछ जो उनके साथ चल रहा है, ISL और I लीग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लीग्स को. क्यों? क्योंकि जितने फॉरेनर्स साइन होने थे वो हो चुके हैं. द इलेक्शंस वर गोइंग टू हैपन विद इन 10 days on 28th of August. Now FIFA said that we want these demands that players should not get voting rights. In fact, FIFA, being a body of the players, should be fighting for the rights of the players. And on top, there are so many corruption cases against Mr. Patel. In fact, he has been linked with a terrorist, Mr. Dawood Ibrahim, and Dawood Ibrahim and usko jo bhai tha Iqbal Mirchi ka ghar liya hua tha, they had taken the house. So how do you feel about this suspension from FIFA? Okay, as a football player, it has been, for me, it has influenced both goodly and badly, because the FIFA has told it's only a warning for the Indian Football Federation, so they will try to take as soon as possible for renewing this position. It's under 17 World Cup is in the venue is in India, right? So there FIFA also banned. It's a warning, not a immediate ban, not, it's a warning. So if we do it all correctly, all the rules and regulations given by them, so the FIFA will be cancel our ban and back to action. Just like a heartbreaking influence by the players and some teams, clubs, management, or etc. But our AFF, we all have now, our India facing mainly on a corruption, like a corruption method. We have to change the corruption method and give more importance to players, clubs, and more young players. FIFA had taken a good decision towards AFF.